Hi everyone, good evening and welcome to this session which is 5 days to CLAT 2024. So just 5 days left. So finally we are almost there. The CLAT 2024 is round the corner and I'm sure you are getting definitely anxious, but that's okay. That's human nature. So we definitely become a little bit anxious when it comes to our goals, when it comes to our exams. So that's a human nature. So there's nothing wrong about it. So this is going to be a quick session today. I just wanted to connect with you all before you hit the examination hall next Sunday, the coming Sunday on 3rd of December. And your biggest test is going to happen on the day as far as your law schools are concerned. So let me quickly set the agenda and then we can move ahead. So today I'm going to discuss a little bit about what you should be doing at this point of time. Next 5 days ka plan kya hona chahiye? What you should be doing on the CLAT day. So are you supposed to study? Are you supposed to do something extra? And what happens post the examination? What is that is in store for you? And definitely my final word for each one of you. So let's go ahead and look at each of the uh, each of the segments which I wanted to discuss today. So glad to have you all here today for this session, and I'm sure your preparations are going on in full swing. The last minute efforts are already in place. You are definitely analyzing your performance. You are looking at your mocks paper. You are just going through it once again so that your final moment revision continues actually. So we have another 5 days left to do some of the actions, and there are some of the actions we should not be doing in the next 5 days, which I'm definitely going to talk today actually. So the first and foremost thing is to finalize your strategy. Yes, that's the point. So whatever you had to do till now, जो भी करना था, जितनी भी मेहनत करनी थी, जो strategy बनानी थी, किस तरीके से पेपर को approach करना है, that you have already done. There is nothing to worry about. See, that anxiety will always be there. वो डर हमेशा बना रहता है. And as I said earlier, वो डर important है. थोड़ा सा डर होना बहुत जरूरी है. So जो strategy है, वो आपका जो गेम प्लान है फॉर ईच ऑफ द सेक्शन शुड बी रेडी बाय नाउ. डोंट ट्राई टू डू एनीथिंग न्यू. डोंट ट्राई टू एक्सपेरिमेंट समथिंग. Like you are doing well in a particular section, it's always advisable to start with that particular section. Don't try to change that at this point of time. I'm sure each one of you know your strengths, each one of you know your weaknesses, and you have worked on those weaknesses to convert them into strengths by now. बट ठीक है, थोड़ा सा वीकनेस रह जाता है, कोई पर्टिकुलर एरिया है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना, उसके लिए कोई चिंता नहीं करनी है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टिक टू योर प्लान. सो जो प्लान आपने बनाया है, यू हैव गिवन सो मेनी मार्क्स, मोर देन 30 मार्क्स, ऑलमोस्ट 40 मार्क्स आप लोगों ने लिखे हैं. तो जो प्लान बना है इतने सारे मार्क्स लिखने के बाद, यू went through the analysis, you did your self analysis. I'm sure that plan is good enough for you. तो लास्ट मोमेंट पैनिक होकर के कुछ भी चेंज नहीं करना है. तो जो गेम प्लान है, हर सेक्शन का जीके का अपना प्लान होगा, लीगल का अपना प्लान होगा, किस तरीके से क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, किस सेक्शन को पहले अप्रोच करना है, that you must stick to right now. So don't make any new assumptions, don't do any experiments now. It is always advisable to pull the scores from your favorite area actually. So whichever section you do well, that should be your starting section actually. Now why this is recommended, now it is not mandatory that everybody follows the recommendation, but why it is recommended, it is recommended you start with your favorite section, the ones where you score the most, because not only you are going to get the score for yourself, but it is equally important to understand that you get that much needed confidence. अगर आप अपने strong area से start करते हो ना, तो आपका confidence boost up होता है in the initial stages when you are appearing for the examination, and that will lift you through for the other sections actually. तो हमेशा अपने strong area से start करना is advised, and that's how you should be definitely. And I'm sure you have worked on all this actually. I'm just reiterating kind of, so you have already worked on this. Sometimes that reiteration becomes very very important. So ये वक्त है अपनी स्ट्रैटेजी को फ्रीज करने का. अगर अभी तक नहीं किया है तो अब कोई एक्सपेरिमेंट मत करो, बिल्कुल फ्रीज कर लो और उसको फॉलो करना एग्जामिनेशन हॉल में. तो नेक्स्ट 5 days का प्लान क्या होना चाहिए बेसिस ऑल दिस? एक या दो मॉक,
इससे ज्यादा नहीं. See, it's not advisable. It will not help much actually. If you want to take so many mocks, if you want to write mock every day, that is something which is not going to help actually. Remember the sessions which we did, the 30-day session earlier, where GP sir was also there, Siddharth sir was there. We advise you to take around 2 mocks a week, but last में बिल्कुल mocks को लेकर के टेंशन नहीं लेना है. So the maximum is 2 mocks is what I would recommend. 1 mock is also good enough. इज जस्ट टू गिव यू दैट फाइनल पुश. वो जो लास्ट का धक्का होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो वो 1 या 2 मॉक लिखोगे, वो मिल जाएगा. टुमारो, डे आफ्टर, दैट इज व्हाट इज रिकमेंडेड. इसके बियॉन्ड, एज यू मूव क्लोजर टू द एग्जामिनेशन, और मॉक्स लिखने की कोशिश मत करो. रादर यू शुड लुक एट योर प्रीवियसली अटेम्प्टेड मॉक्स. उनको रिविजिट करो सेक्शन बाय सेक्शन. सी हाउ यू हैव डन दोस पेपर्स, क्या अच्छा किया उसके अंदर. वो जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है उसको देखो. वो जितने भी पुराने मॉक्स आपने लिखे हैं, जितने भी मॉक्स अभी तक लिखे, उनको विजिट करने की कोशिश करो. और उनके थ्रू हर रोज कोशिश करो कि एटलीस्ट 3-4 आरसीज डेली सॉल्व करो, 3-4 लॉजिकल रीजनिंग के सेट सॉल्व करो, 3-4 लीगल रीजनिंग के सेट सॉल्व करो. सो जस्ट लुक एट फ्रॉम अ सेक्शनल टेस्ट पर्सपेक्टिव. तो सेक्शन बाय सेक्शन टेस्ट, स्मॉलर टेस्ट, उस मॉक्स के थ्रू आप प्रैक्टिस करो. वो ज्यादा बेटर है, वो ज्यादा हेल्प करेगा, रादर देन राइटिंग टू मेनी मॉक्स और देन पुटिंग योरसेल्फ इनटू द एनालिसिस. क्योंकि एग्जाम प्रेशर है. अगर गड़बड़ करोगे, अननेसेसरी टेंशन लोगे, तो ज्यादा मॉक्स लिखने से भी कोई फायदा नहीं होने वाला है. रादर यू शुड प्रैक्टिस ऑन अ डेली बेसिस फॉर नेक्स्ट 4 days एक्चुअली. बिल्कुल आराम से सेट्स उठाओ और सेट्स को प्रैक्टिस करो. जितने भी जीके के नोट्स बनाए थे या मंथन को फॉलो किया है, आई एम श्योर आपने उसको बुक मार्क किया था, आई एम श्योर उस आपने हाईलाइटर यूज किया था. वो जितने भी इंपॉर्टेंट की नोट्स हैं आपके, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स आपने हाईलाइट किए थे, कंटिन्यू रिवाइजिंग देम. दैट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उसको रिवाइज करना बहुत जरूरी है. लास्ट मोमेंट रिविजन इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डू नॉट स्टार्ट एनी न्यू टॉपिक. अब इस समय कोई नया टॉपिक किसी सेक्शन में पकड़ने की जरूरत नहीं है. जितनी मेहनत आपने की है, बिलीव मी, यू हैव डन योर बेस्ट एंड आई एम श्योर यू कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स. जो अननेसेसरी रिस्क जो है लास्ट मोमेंट का, वो किसी भी तरीके से लेने का मतलब नहीं बनता है. सो डू नॉट गो हेड एंड स्टार्ट एनी न्यू टॉपिक. यू माइट नॉट बी सो कंफर्टेबल विद दैट एक्चुअली, इजंट इट? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, कीप योर काम इन प्लेस, मेंटेन योर कूल. इस समय पैनिक बटन दबाने की कोई भी जरूरत नहीं है. रिमेंबर, इट्स एन एग्जाम. What is important is you go and enjoy those 2 hours. The way, the moment you start enjoying your exams, you'll always know that you have done well in those exams which you enjoyed actually. So go enjoy your CLAT. For that it is important. Next 5 days किसी भी तरीके से पैनिक नहीं होना है. बिल्कुल अपने काम, अपने कूल को मेंटेन रखना है, और कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अननेसेसरी करने की जरूरत नहीं है. ओके. What happens on the D day? उस दिन क्या करना है? जो क्लैट का डे है, 3rd of December 2023, उस दिन क्या करना है? सो उसके लिए ऑब्वियसली आपको रेडी होना पड़ेगा. कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ लॉजिस्टिक्स एंड ऑल, तो वो पहले से प्रिपेयर्ड करके रहना बहुत जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो. यू हैव टू हैव योर एडमिट कार्ड. प्रिंट आउट अभी तक नहीं लिया है तो बिल्कुल अभी से लेकर के रख लो. डोंट वेट फॉर द लास्ट मोमेंट. एनीवेज यू शुड रिमेंबर 1:30 तक ही प्रिंट आउट अलाउड होगा, बट डोंट वेट फॉर द लास्ट मोमेंट. सिंपली गो अहेड, टेक द प्रिंट आउट. फोटो बाई चांस अगर क्लियर नहीं है तो एक अपना सेल्फ अटेस्टेड कहीं और अटेस्ट कराने की जरूरत नहीं है. एक सेल्फ अटेस्टेड फोटो कैरी करना, एंड इट इज एडवाइज टू एवरीवन, रादर यू कैरी अ सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ ऑफ योरसेल्फ. इट डजंट हार्म. ठीक है, अपना फोटोग्राफ लेकर के जाओ. यूज जरूरत पड़ गई तो यूज होगा, नहीं हुआ तो आप घर वापस लेकर के आ जाना. उसमें कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है. सो एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट ले लो. Read the instructions which are given in the admit card. That is very very important. And what all you need to carry, क्या क्या कैरी करना है वो इंपॉर्टेंट है. पहली बात, आपको एडमिट कार्ड कैरी करना है. दूसरी चीज, आपको क्या कैरी करना है? आपको एक पेन कैरी करना है. रिमेंबर, इट हैज टू बी अ बॉल पॉइंट पेन. जेल पेन लेकर के मत जाना, बिकॉज जेल पेन इज नॉट एडवाइजेबल ऑन दी OMR. सो ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन एडवाइस किया उन्होंने, और यही कैरी करना. इसके अलावा यू आर
you are allowed to carry an analog watch. देखो सिंपल वॉच होना चाहिए, स्मार्ट वॉच बिल्कुल ही कोई रिस्क नहीं लेना है, जस्ट कैरी एनालॉग वॉच. इसके अलावा कुछ भी और एक्स्ट्रा कैरी करने की जरूरत नहीं है. Beyond this, you should carry your photo ID proof. गवर्नमेंट फोटो आईडी प्रूफ जो गवर्नमेंट ने इशू किया है वो कैरी करो. आई एम श्योर ईच वन ऑफ यू हैव योर आधार कार्ड. आधार कार्ड कैरी कर सकते हो. बाय चांस आधार कार्ड पुराना है जिसमें आपके आइडेंटिटी या पिक्चर बहुत पुराना है, सो इट्स बेटर कैरी योर पासपोर्ट इफ यू हैव दैट एज वेल. ठीक है. डू नॉट कैरी एनीथिंग which is valuable. They will not allow it and they will not take that into consideration. वो risk नहीं लेना है क्योंकि centers are not authorized to keep your valuables. So do not carry your mobile phones unless you are going with your guardian, your parents. अगर parents के साथ जा रहे हो, then only carry the mobile phones so that you can hand it over to them. So do not carry anything extra if you are going alone. Just carry an analog watch, just carry a photo ID proof, a blue or a black ballpoint pen. I would rather advise carry both colors. दोनों रख लो, कोई दिक्कत नहीं है. 2 पेन तो जरूर रख लेना, और एडमिट कार्ड की कॉपी. इसके अलावा उन्होंने कुछ भी एडवाइस नहीं किया. You may want to carry water bottle. Ensure it's a transparent one. Get a local water bottle. बिस्लरी बाहर से ही खरीद लेना या घर से लेकर के जाना, बट ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल होना चाहिए जो आप रेगुलर यूज में किसी भी तरीके का स्टील फैंसी कुछ भी यूज करते हो वो डेफिनेटली कैरी मत करना. प्लीज अंडरस्टैंड, सेंटर्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू कीप योर वैल्यूएबल आइटम्स. वो उसके लिए बिल्कुल उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. अगर लॉस होता है तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ठीक है. Check your travel plans. If you are traveling to a different city or within the same city where you reside, please start early. जल्दी निकलो, 1 घंटे पहले पहुंचो. इंश्योर करो कि आप जो रिकमेंडेड टाइम है उससे पहले पहुंचो. इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू टेक योर सीट and just ensure meditate for at least 10-15 minutes before you start the paper. तो हमेशा अपनी सीट पे पहले जाकर के बैठ जाओ, थोड़ी देर वहां पे आराम से मेडिटेट कर सकते हो, चुपचाप शांति से बैठो. दैट विल एक्चुअली हेल्प यू रादर देन पैनिकिंग एट द लास्ट मोमेंट. रिमेंबर, हर सेंटर पे भीड़ हो जाता है, पेरेंट्स भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं. सो इट इज ऑलवेज एडवाइज टू रीच वेल अर्ली इन टाइम. जो उन्होंने टाइम दिया उससे एटलीस्ट हाफ एन आवर 1 आवर पहले पहुंचने की कोशिश करो. और अगर बाई चांस टेस्ट दूसरे सिटी में है, इफ यू कैन रीच अर्ली, मे बी अ डे अर्लियर, डू दैट. और इफ नॉट, reach the center, reach the city the very next morning or on Sunday itself, and try to reach a further earlier. थोड़ा और पहले पहुंचने की कोशिश करो. अगर एक दिन पहले पहुंच जाते हो, फेमिलियर नहीं हो लोकेशन से, तो एक दिन पहले ही सेंटर विजिट कर लो. दैट इज व्हाट माय एडवाइस वुड बी. ठीक है. रीड द इंस्ट्रक्शंस व्हिच इज गिवन आउट देयर. नींद बहुत जरूरी है. See, it is not about just mental state, it is about physical state as well. और नींद जब पूरी नहीं होती है ना, तो फिजिकली हम एक्टिव नहीं होते हैं. सो रात में बिल्कुल 8-9 घंटे सोना है. तो थर्ड की नाइट है, बिल्कुल सेकंड की नाइट जो है, बिल्कुल 8-9 घंटे की नींद लो आराम से. एकदम यू विल बी फ्रेश एक्चुअली. बिल्कुल ध्यान, बिल्कुल रिलैक्स फील करोगे, बिल्कुल फ्रेशन अप फील करोगे. जब नींद पूरी नहीं होती है ना, तो सारे प्रॉब्लम शुरू होते हैं बॉडी में. सारे प्रॉब्लम्स नींद की वजह से शुरू होते हैं. सो यू नो, दोज हु स्लीप ओनली 4-5 hours, you'll see they are struggling physically, they are struggling mentally. That should not happen on this particular day. So जल्दी सो, जल्दी उठो, बट कम से कम 8 घंटे की नींद. डेफिनेटली 8 hours of sleep is something which is definitely required. Don't go for heavy breakfast or lunch कि वहां पर जाकर के you started feeling sleepy. Have a light one, have a balanced one. एग्जाम में जाकर के सोना नहीं है, एग्जाम लिखना है, isn't it? It is not a good time to write the exam. It's from 2 p.m., my dear friends, just post lunch. So just have a balanced but a light breakfast. Wear clothes where you are in comfortable. Winter is just about setting in actually. ना बहुत ज्यादा ठंड है, ना बहुत गर्मी है, तो कंफर्टेबल रहना बहुत जरूरी है. इफ यू मतलब if you feel the cold, actually carry woolens actually, but light woolens carry करो. अभी heavy woolens की requirement नहीं है, especially in northern India. अगर मैं बात करूँ तो साउथ में तो definitely अभी जरूरत नहीं पड़ेगी. But wear comfortable clothes. That is what I would say. Before you leave your home, check twice, check thrice. You are carrying all the essentials which have been recommended. एडमिट कार्ड कॉपी लेकर के जाना है.
आपको अपना गवर्नमेंट आईडी प्रूफ लेकर के जाना है, इसके साथ साथ आपको बॉल पॉइंट पेन्स ले जाने हैं, इसके अलावा आपको एनालॉग वॉच कैरी कर सकते हैं आप, अगर आप टाइम देखना चाहते हो तो आप एनालॉग वॉच कैरी कर सकते हो। Don't carry any valuables including your mobile. Don't carry any stationery which is not required. Jabardasti pencil, sharpener, eraser, scale, don't carry that. Some of the centers, they might be so strict that they won't even allow a transparent carry bag. So they won't allow anything beyond your ID proof, your admit card, your pens and all. Actually, carry a simple transparent water bottle for yourself. That's it. Most of the centers, they make arrangement actually, because they are in schools or colleges, but still carry those actually. ठीक है? As I said, head to the examination with plenty of time. पहले पहुंचना है, last moment पे बिल्कुल नहीं पहुंचना है, और सेंटर पे पहले पहुंच जाते हो. Don't wait outside looking at other people, what they are gossiping. Simply go inside. If you are allowed, go inside, take your seat. And it is important to carry that positive with you. जितना पॉजिटिविटी लेकर के जा सकते हो वो ही हेल्प करेगा, और कुछ हेल्प नहीं करेगा. तो जितना ज्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड रखोगे, दैट इज समथिंग विच इज गोइंग टू वर्क फॉर यू. ठीक है? Use the restroom before the exam starts, because they'll not allow you. You are not allowed to leave the room until the exam is over. So nobody will be allowed to leave the room before 4 p.m., the closure of the examination. So go to the restroom, because every second in the paper matters. Please understand, every second in the paper matters. So settle hona bahut hi zaruri hai. At any point of time you feel that your brain is freezing up, एक stagnation आ रहा है, just close your eyes for 30 seconds, relax yourself and restart. पैनिक नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है. एग्जाम है, प्रेशर है, बट कहीं पर भी लगता है कि यार अब दिमाग काम करना बंद कर चुका है, आई हैव बीन रीडिंग टू मच, सिंपली क्लोज योर आईज लाइक यू मेडिटेट. 30 सेकेंड्स के लिए आईज क्लोज करो. you'll have that positivity coming back to you. Just let go of every other thought which is coming in your mind. Don't panic at all. Simply restart your brain. So whenever your computer hangs, what you do, you simply restart it, and it takes only 30 seconds for it to do that. Your brain is your computer, which is your what you are taking to the examination hall. तो पैनिक नहीं करना है, सिंपली अपने आप को रीस्टार्ट करना है, मेंटली अपने आप को रीस्टार्ट करना है. And last but not the least, enjoy those 120 minutes. That is something which you should be doing. Go enjoy CLAT 2023. पेपर आसान होगा, सबके लिए होगा. पेपर डिफिकल्ट होगा, it will be difficult for everyone. If the paper you believe is weird, kind of, it will be weird for every one of you, including me, when I'll be sitting next to you taking the examination. We don't mark anything, don't worry. If that is what you start thinking about. So कुछ दिन अगले क्या करने हैं, स्टे अवे फ्रॉम पीपल हु हैव नेगेटिव थॉट्स. तो जो अगर आपके आसपास नेगेटिव लोग हैं, डेफिनेटली तो उनसे दूर रहने की कोशिश करें. याद है स्कूल में व्हेन यू आर गोइंग टू राइट द एग्जामिनेशन, board exams, you will always looking for that person who should not come across to you, because you'll ask those questions and you start panicking. So stay away from people who you believe have negative thoughts, and tell yourself that it's a test. Please understand, it's a test, an exam for seeking admission. While it matters the most, but it is not the end. Isn't it? It is not the end. ये अंत नहीं है, ये एक रास्ता है, एक माध्यम है. Important है, I completely agree, but the moment you start taking it anything other than a test, then that pressure will start to build up, जो नहीं होना चाहिए. Act like you are the only person in the room. कौन क्या कर रहा है रूम के अंदर. Don't look at the facial expression of others. हम पैनिक कर जाते हैं कि यार एक्स्ट्रा कॉपीज मांग लिया, चलो यहाँ एक्स्ट्रा कॉपीज नहीं मिलने वाली. बट स्कूल में होता था ना, यार व्हाट दिस गाय इज डूइंग. डोंट डू ऑल सच सॉर्ट ऑफ थिंग्स. वो बचपना अब खत्म हो जाना चाहिए. Just assume that you are the only one person sitting in the room. Just have only your paper. Look at your paper. Don't look here and there at all. बिल्कुल देखना ही नहीं है, इतना समय नहीं है. If you start doing that, you are wasting precious seconds actually. So that is something which is not going to help you. जो भी अच्छा किया, जो भी प्रिपेयर किया पिछले 6 महीनों में, 1 साल में, 2 साल में, जो भी चीजें अच्छी हैं उनको रिकॉल करने की कोशिश करो. जो आपके लिए काम करता गया, आपकी स्ट्रैटेजी को लेकर, आपने जो मॉक्स को एनालाइज किया था, whatever good happened to you, just recall them. And more importantly, as I said, वो positive attitude. So that should also include never give up attitude.
वो बिल्कुल पेपर में और उसके पहले झलकना चाहिए. दैट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Last but not the least, I'm not going to make it any complicated over here. Post CLAT, I'll come back with the counseling process detailing. मैं सब बताऊंगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. जैसे जैसे कंसोर्शियम की अनाउंसमेंट आएगी मैं सब बताऊंगा. बट ऑल यू हैव टुडे, ऑल यू नीड टू रिमेंबर that there are other exams after CLAT as well. So this is not the end of the story. CLAT is not the end of the story. It's a 2-hour game which you are going to enjoy. You have IELTS coming up next week on 10th of December. You will have SLAT coming up in May. You will have MHCET coming up in May. You will have Christ University. You have NLAT. So many other exams are there. So many for good colleges I'm talking about. I'm not even considering the average ones. So we are talking about the good colleges in the country. So CLAT is not the end of the day. All we need is to have that practical approach. Your life is not going to end. Your exams are not going to end on 3rd December. Don't forget, you'll have your board exams coming up for most of you, pre-boards, boards and all. So एग्जाम है, एग्जाम की तरह डील करो, एग्जाम की तरह जाओ और एंजॉय करो वो 1-2 घंटे को. That is what is going to help you out. Don't actually feel that this is something which beyond this I don't have a life. You have your whole life out there actually. बहुत एग्जाम्स है, बहुत अच्छे कॉलेजेस की अपॉर्चुनिटी है. Just go ahead and enjoy those 2 hours every time. CLAT to definitely enjoy karo. And this is what my final word to each one of you is: all the best. You are rock stars, and definitely you are going to come out with flying colors. I'm sure you will get into one of the best colleges in the country, including the national universities. तो बिल्कुल पैनिक नहीं होना है किसी भी तरीके से. अगले 5 दिन रेगुलर प्रैक्टिस मोड में रहो, बट एंजॉय करो. दैट इज समथिंग यू शुड बी डूइंग. बिल्कुल एंजॉय करो अपने प्रिपरेशन को, अपने एग्जाम को. That's what you should be doing for next 5 days. And on the exam day, Saturday, go watch a movie. Go watch first. Go this Sam Bahadur is releasing. I'm really looking forward to it. Actually, it's been 10 years I have gone to watch a movie in a cinema hall. I'm definitely going to watch a movie. Go ahead, watch a movie, whichever you want to like. Go ahead, enjoy a web series. Saturday, बिल्कुल बिल्कुल कोई टेंशन नहीं, कोई पैनिक बटन नहीं, कोई चीज नहीं. ठीक है. बैग में फोन लेकर जा सकते हैं क्या? नॉट रिकमेंडेड. प्लीज अंडरस्टैंड, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर वैल्यूएबल्स. पासपोर्ट नहीं है, कोई भी फोटो आइडेंटिटी कार्ड जो गवर्नमेंट इशूड है वो लेकर के जाना होगा आपको. सो यू कैन टेक योर आधार, नॉट अ प्रॉब्लम. ओके. एनी ड्रेस कोड? नो ड्रेस कोड. वेयर द ड्रेस यू आर मोस्ट कंफर्टेबल विद. जो ड्रेस में आप खुद को कंफर्टेबल फील करते हो. यू बिलीव जीन्स एंड टी शर्ट वर्क फॉर यू. You believe jeans, t-shirt, half sweater works for you, whatever it is. There's no dress code at all. You should be comfortable. That's what it is all about. Any clue if blank A4 sheets are allowed for solving quant? No. You don't get any sheets out there. Your paper, the last page, inside of the last page is, and wherever you want to use, you can use the question paper for your rough work. You do not you do not get a separate A4 sheet blank. So जो क्वेश्चन पेपर है उसमें ब्लैंक स्पेस होता है. बाकी पूरे क्वेश्चन पेपर को आप जिस तरीके से यूज करना चाहो वो यूज कर सकते हो. ओके. Sanchit, essentials to carry. I'm reiterating: your admit card, black or blue ballpoint pen. I would suggest carry two. Photo ID proof, Aadhaar card, passport. It should be a government one. Analog watch you can carry. The first three are essential ones. Analog watch you can carry, and a transparent water bottle, though it is not mentioned, but they'll definitely allow it. Most centers do have their own arrangement as well. Beyond this, they'll not allow anything else. Just in case your photograph is not clear on the admit card, you carry a self-attested photograph. Self-attested photograph का मतलब होता है कि अपना एक पासपोर्ट फोटो कैरी करो और उसके ऊपर अपना सिग्नेचर, क्रॉस सिग्नेचर कर दो. That's it. You cannot carry anything. No rough sheets, no blank sheet. आपको जितनी चीजें एडमिट कार्ड में कैरी करने बोला है उसके बियॉन्ड बाकी सब वो उठा करके डस्टबिन में डाल देंगे, इंक्लूडिंग योर मोबाइल फोन, माय डियर फ्रेंड. जस्ट गो विद दैट थॉट. Can we watch Three Idiots? Why not? That's a movie everybody enjoys. Definitely you should do that. नहीं, बैग में फोन लेकर के नहीं जा सकते हैं. वो आपके बैग के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे. कोई और उठा करके ले गया तो यू विल लूज योर फोन. इट्स नॉट एडवाइजेबल.
It's not advisable. Any movie recommendations? I'm less of a fan these days of movie, but yes, I'm looking forward to Sam Bahadur. It's a movie made on the life of former Chief of Army Staff, Sam Manekshaw, and a very interesting character. I think you should definitely watch that. I'm definitely आज कोई क्वेश्चन स्कोर्स के ऊपर बात नहीं करते हैं, ठीक है? सो डोंट वरी एट ऑल, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लो, अभी इस समय बिल्कुल भी नहीं लो. कैन वी कैरी अ क्लियर फोल्डर इंस्टेड ऑफ स्टेशनरी? डोंट कैरी ना. व्हाई डू यू नीड अ फोल्डर? जबरदस्ती क्यों कैरी कर रहे हो? कोई सेंटर ऐसा रिजिड होगा जो सब फिकवा देगा. All you need is an admit card, you need a ballpoint pen, you need a photo ID proof, and if you want, carry an analog watch. That's it. That's it. इसके बियॉन्ड मतलब जबरदस्ती क्यों कैरी करना है? समथिंग दे माइट थ्रो इट आउट, सो क्यों कैरी करना है? ठीक है, तो वो रूम में कुछ भी नहीं ले जाने देंगे, गेट पे ही रखना पड़ेगा, और गेट से अगर कोई ले गया, दे विल सिंपली से वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल. आई हैव लॉस्ट माय वन वॉच वंस एक्चुअली, सो डोंट डू दैट एक्चुअली. व्हाई लूज योर वैल्यूएबल एक्चुअली? ठीक है, चलो. So go ahead, enjoy your next 5 days, and more importantly, enjoy the exam on Sunday. That is what you should be doing. Sunday को exam enjoy करो, और exam के बाद we will be meeting up around 4:45, 5 maximum for live analysis of the paper, where GP, Siddharth, Prasan, Jijo sir, all of them who are writing the examination, they will be joining me, where we'll be talking about how the paper went and what could be the probable cutoff for each of the national law universities actually. So we'll come back immediately for the analysis after the examination. 4:45 is what we are targeting, maximum 5. All the action will happen on lawentrance.com/CLAT, and keep yourself available over there after the examination. We'll also be solving the paper out there actually. So a lot of action are being planned for the D-Day, which is CLAT after 4 p.m. Don't forget to join us on lawentrance.com/CLAT. Thank you so much, and all the best, my dear friends. Remember, you are the rock stars. You are going to rock the paper on that day. And with some of us, some of you, probably those who are taking the exam in Greater Noida, I'll be there actually. We can definitely catch up. Chalo, milte hain fir third ko at 4:45 p.m. on this platform itself. We'll be coming here. All the action through lawentrance.com/CLAT. Thank you so much for joining. Enjoy, study, enjoy, and enjoy your examination.